about the www. I think most of you guys already know what is www, but we are going to discuss some sort of another stuff into it. And HTML tools. HTML tools may include like the Visual Studio Code, Sublime Text, and Notepad. What are the content? What are the containers we use to write code into it? And some terminologies, how to create an HTML document, saving and viewing HTML document, how you can save HTML document, what are the syntax of saving it, and how to view our HTML document on a live servers, and some text. Like there was a lots of text in HTML, but in reality, I would like to tell you, we use only same text again and again. This is the thing about it. When you open a browser and search HTML text, there's a lots of text there, but in reality, when you start developing things, you use only same text again and again. So don't worry if you don't remember all the text. It's fine. When you start building things up, you guys to let you get to know lots of new text every day. So special characters, what are the special characters? We are going to learn all of these things in the later in the session. Advantages of HTML, disadvantages of HTML. So yeah, let's get started. Okay. So introduction. Can I share my Visual Studio Code? If okay, yeah. First started with the only theory. What you guys want? We directly started with a practical explanation, or you want to guys some theory to it first? You can text, you just drop a text. I'm reading the text. I think you Is the PPT is go visible? and then immediately go for the code. I don't know what's happening with the Teams. My PPT is going and coming back, and I skip theory. Okay, do you guys know the theory of what is the definition and all of these things? Okay, let me share my Visual Studio Code. Wait for 5 minutes, guys. Hi guys, my screen is visible. Screen setting. Okay. 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 Is my screen is visible? Yes. Yes, it's Okay. visible. Yes, yes. Yeah. Okay. So, okay. So let's first you have to make a folder into your desktop to store a file so we can open it in Visual Studio Code. Currently I'm using Visual Studio Code, but you can use any text editor. You can even write HTML in a notepad also. So we write it in HTML. Okay. We make a folder and we are open the folder. Then HTML. Okay. Just a Now second, we make a Prachi. file. Guys, this session is specifically just a second. This session is being specifically done for you guys. It is not for me or the BobDAO team, or does Pranchi have a tangible output for this. If you guys want to be in the session, please respond. I humbly ask you to respond to her. Whatever she is a new educator, she's trying to help you guys learn something cool. Okay. I don't need to repeat myself with every new educator coming in. Uh, kindly respond. Thanks. And we will do some like in the session ending, we will discuss a lot of stuff regarding to the college education and all. So don't worry that this session will be boring and things like this. We will discuss a lots of stuff when we complete it with the basic HTML. When we learn the basic HTML, then we discuss a lot of another stuff, right? Yeah. Okay. So is my Visual Studio Code is visible? Okay. So Yeah. we make Yeah. HTML files. Like firstly, like we index.html, we save the HTML file like index.html tag, or we can even use the HTML, another like HTML. Okay, right. We have to put .html when we are saving the file like
how many of you are using Python? Like lots of people are using Python nowadays. We save the file .py. There is a different extension that is very useful that tells the computer that this is file belong to this specific language. That's why we write .html thing into it. So why do we do like HTML5? In Visual Studio Code, you get this benefit like it is also made in this way. These are the different texts. Okay, for the text, we may move to the theory because it may require some theory knowledge to it because these are the basic texts. Okay, that's moving to the some special theories. Okay, where is my PPT? I personally don't like Microsoft Teams. Uh, so till now we know how to save a file and open it to the Visual Studio Code. Share. Okay. Okay, guys, wait. It is upload a copy. Yeah. Yes. So basically, what is the HTML? We all know it's a hypertext markup language. What is real meaning of markup language? Markup language is a language which is used by text. We specially write. We don't have to write lots of stuff. We don't need to think lots of logic when we are writing HTML codes because this is a really simple language. Like you start loving it. It don't require you to put so many hours into it, but it's very important. If your website don't have HTML page, then there is no alternative of HTML till now. So HTML is a markup language. It's called markup language because it is based on a text. We write text, we know text. There are different things about the text. So basically, we called it in the markup language because it based on a tag system, right? That's why it's called markup language. As you remember, we don't call Python, JavaScript a markup language. Only HTML is a markup language. So, introduction to HTML, we know how to save a file, how to really open the HTML file in the Visual Studio Code, how we save our HTML file with a .html tag, which is very important. If you don't save a file in HTML tag, .html tag, then the compiler will be shocked, like what are you writing? So object of HTML, what is the really objective of HTML? Like if you are building a website, if you don't write HTML, then it's impossible to build a website until it's WordPress or Webflow. But in reality, when you are building a website, you need a HTML page. Basically, it is a structure we call, like you all heard about it, like it is called structure of a web page. In structure of web page, we are gonna build lots of stuff. We're gonna see it how everything is worked in a web page. So first, let's move. Oh, there was a different thing like this. If we have to go on live screen, then this PPT will be gone. Uh-huh. Okay. So create, save, and view a HTML document. Format a web page using different headings tag. Describe ordered and unordered list. Explain graphics in HTML document. These are all our very basic things. Okay, so let's start it with the basic tag. Until now, we have learned about it, like how to save HTML file, how to open HTML5, why we are doing HTML5 because there's no alternative of HTML. Like your web page, this is a very important thing about your web pages that there is a HTML into it. Like it is a structure. It worked as a structure. And in a structure, we write about these are the HTML tools. We already learned about the HTML tool. Like you can even write the HTML in your notepad. Like there's a nothing you can't do it into it. Okay. So HTML tool has been done. Okay. So there's a basic terminology. These all are not useful things. So let's move to the main section. Like let's move to the practical because this PPT is like okay, essential text. Okay, let's move to the essential text where which we are gonna see into our text editor also. So let's learn about it.
So what is the really is HTML tag? You have to write HTML code within these two tags. Like there is a pair tag. When you have open tag and close tag, these are called pair tag. There is a lots of exception like break tag and horizontal line tag, HR tag. There's lots of more example of a single pair text, but mostly HTML we get to know about the pair text like HTML5. We write everything between the HTML5. For example, here a screen. Okay, here. Okay, okay. My Visual Studio Code is visible, right? Yes. Okay. So everything you can notice it like everything is written in this HTML tag. Like if you have to edit anything, these are the starting tag. These are the starting tag, and this is the end tag. Like everything must be written within those two tags in the HTML file. Okay, when you write something outside this HTML tag, like whatever, the compiler will not be understand. Compiler will not understand that this is a HTML language and will not show in your website. Okay, I want to let you know if your desktop is open, please download the live server. Like live server is available in your extensions. If you write live server, yeah, this is my one is already installed. You install the live server. What happened when you install the live server? You open everything. Like if I write h1 equals to branch, right? And when we open into the live server, you see like my laptop is working very slow. Okay, you will see we are opening to Pranshi. Everything is visible under the Pranshi. Okay, when you open the live server, what we get the benefit is like you have to click just right click and click into the open live server. Everything will be visible in your web page. Okay, so if you are sitting with your laptop, I'm giving you 3 minutes to install the live server. Install the live server and nothing is more demanded. How many of you are sitting with your laptop? Just write in the text like yes, we are sitting in the with our laptop. Someone raise the hand. Sudiksha. Okay, Sudiksha, thank you. Yes, sitting. Okay, thanks. Then please install the live server in your Visual Studio Code. You all install the Visual Studio Code now. If you're Yes. working in the notepad, then it will be all right. Like you don't have to very worry about it. Okay, giving you a few minutes to install the live server. It don't require so much time. जल्दी से हो जाएगा. So every one of you are from Bangalore. No. Anyone from Jaipur? Oh, you. I'm from Jaipur too. Most of them haven't joined from Jaipur today, like alumni students. They will be Oh, joining us. nice. Oh, nice, nice. Would love to meet you one day, guys. Those are from Jaipur. Okay, done. Okay. There are Okay, done. live Okay, servers. Hello. yes, yes, yes. Live servers, there are many different publishers. So, which is the correct publisher? I want to know. Okay, okay, yeah, yeah. The correct publisher. The Ritwik Day, this one. This one which has rating of 4, 1, 2, 3, 4, 4.5. Okay. The first one will come. You download the first one. It will come in the Yeah. top. Top पर Okay. याद होता है. Yeah, yeah, yeah. Done, done, done. Okay, thank you everyone. Okay, can we move forward? Yeah, we can.
Okay, okay. So we heard about like you have to write everything between those HTML tags, so your compiler will know that you are writing a HTML tag, right? And this is very important. Like you cannot write a code or a tag outside the HTML. Like it doesn't work. And what is this language tag? These are the also there's a HTML is full of tags. The first when I start learning the HTML, I was like, oh, how do I remember all the tags? But no worries, we use just basic tags in our everyday life. We don't use so many tags, but yeah, it's work. If you remember, if you work, if you do not use, if you work on yourself again and again, if you practice the development again and again, you will get to know lots of new stuff every day. Like I'm still find a new stuff whenever I start to make a website again. I get to know oh ऐसा भी होता है. This is a thing like मेरे को अभी तक ये भी नहीं पता होता कि अच्छा ये अभी भी हो रहा है. Like things like this. So don't get worry about it. You will get to know things with the time passes. Okay. And this is a language. Language which means EN is English. Like you can write any languages into it, but basically we use English language to it. These are the language tag which tell us about the language. These are the head tag. Basically what head tag is come, it is come to the top of the tag where we write all those things. And why we use all those things is very important. When you start, go to the tutorial of YouTube, when you start open the tutorial in YouTube, they start telling the all the text about the heading tag, paragraph tag, but they don't tell about what is all these things are actually do. Like all these things are actually do to make our web page responsive, right? Responsive is we are going to learn more about it. Yes, you have to write additional code to make the website responsive, but it this thing is meta tag is also work. Like you have to remember, like when we learn yes, tomorrow we will learn about the CSS. Then we will link our CSS file in this section. Like everything will be linked to our HTML tag, like uh, language, Google language. For example, let's go to the example. If we go to Google language, Google fonts, Google fonts. Okay, when we're deciding about what fonts will be visible to our visible to our website, then okay I click on this font and then you will see the code. Okay, then you will see the code. Where do we see the code here? I have to log into it, I guess. Okay, yes, you're gonna see a tag here, like everything is okay. Is this visible? Okay, you have to Yes, link yes. this code to your heading section. Control plus C. So everything you are linking to your HTML is come under the head tag. Like everything, like we are connecting our style sheet to the HTML, everything come under it. We connected a Google font to our HTML. We write this link into the heading tag. So heading tag is important for writing it. Now what the title tag does? Title tag tell the about the document. Like when I open this from the open server, you will see what is visible here. Like it is not zooming. What is visible here? It is document, right? Your title will show on top of your web page. This is what title come into it. Like okay, document one. You will see the change. Document one will be visible here. So title is very important. Like you have to building your own company or some website. You have to write the title. Title you have to write title of your web page into this title text, right? And till now we learned about everything between the HTML language tag, what come under the head tag. Now come into the body. Body of a tag, like body is like when I write Pranshi Sharma, it come under this section. Like body is a real body of your web page. It is come under like you are writing a heading, you are writing a paragraph, you are importing a picture, you are importing a video, whatever come, this shall be come under your body tag.
right? Everything will become under like div tag. If we write div and we make unordered list, for example, one cat, okay, another or unordered list, two dogs. So everything will come under everything will come under your body tag. If you are listing whatever it happens. For example, let's open one website. Okay, कौन सी website खोलें? Let's open learn basic HTML. We open the free code cam website. Now what happening is here, this everything will come under the body section. Okay, the basic body section will come like it is like three sections is divided. First is first paragraph, second is this paragraph, third is this paragraph. Then this is a whole body. Everything would be written under the body. Right? Understood? Okay. Then we move forward to what is H1 tag. Basically, H1 tag is means of heading. Right? If I write heading, you're gonna see Pranchi Sharma. And the one thing is because there's a lot of headings like H1, H2, H3, H4, H5, H6. There is a type of heading which is based on size. Like if I write something in H2, you will see the difference. Pranchi. You will see the difference. Like it is in a shorter size. Okay, when I write the same thing in H3, you will see the more shorter size. Okay, so these are the heading tags are starting from H1 to H6. It depends. And plus one point is you can even edit these sizes by adding style tag. Okay, style tag height नहीं size होएगा इसमें font size equals to 2 rem. This is rem. Another is a like क्या बोलते हैं उसमें when we are अपन कोई वेट की बात करते हैं तो उसमें आता है केजी ग्राम्स एंड थिंग्स लाइक दिस. तो इसमें भी एक चीज को डिनोट करने की बहुत ज्यादा यूनिट्स होती है. लाइक यू कैन से इट्स अ यूनिट और अनदर वर्ड आई डोंट रिमेम्बर इसको क्या बोलते हैं. बट यस यू कैन से REM, WES. There's a different text. You are gonna learn more about it in the future. Like we are not going that deep. वरना जो पढ़ा रहे हैं वो भी समझ नहीं आएगा. So basically H1 you can edit this thing in. आप हेडिंग 1 की भी साइज चेंज कर सकते हो विथ स्टाइल टाइप. स्टाइल फॉन्ट साइज दिस. बेसिकली यू हैव टू राइट. अपन इसमें भी एडिट कर सकते हैं. स्टाइल 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 में अपन और भी चीजें चेंज कर सकते हैं लाइक अलाइनमेंट, एक्स अलाइनमेंट. ओके, जैसे ये अभी लेफ्ट में है अपन इसको राइट कर देंगे. ओके वो फ्लोट होएगा. ओके ओके फ्लोट टेक्स्ट अलाइनमेंट फ्लोट लेफ्ट नहीं अपन इसको करेंगे राइट. देन यू विल सी समथिंग it come into this like Pranshi is visible in left side. It is visible कि right side पे भी Pranshi visible है. How this property, this we can float a heading, paragraph or whatever is written. You can even float a image, document, everything can be float. Float basically means if something is written in the right side, you want it to be in the left side, you can just use this property. Float properties like font size is also a property. In a style like font size we can increase or decrease the size. In style float is a property which you can float the objects. Like basically you can use it is used for the object because we can float paragraph, we can even float a heading, we can even float a image, we can even float a video. Everything can be float. So basically float is a property which is used to decentralize. You cannot decentralize the word of something else which is used to decenter something, right? You can even float it to the center and things like that. There are lots of properties like okay, if we go into the style you will see display, border, color. Okay, let's try the color. White is 111. No, white is FFF. Okay, this is white.
You will see nothing here because वो white हो गया है, right? We can try to pink try करते हैं. I don't remember the code. Pink. You will see this branch is covered in pink. Like there is a lot of property which you can return in the style. You can even edit a single, like you can even edit this and in HTML. Not we are not styling things in the CSS. Styling not means that you have to use CSS. You can even style a thing in HTML also, but to style a thing in advanced, that's why we use CSS, Tailwind, Bootstrap, because we want our styling to be the more advanced. Like you can basic styling तो अपन HTML से भी कर सकते हैं, right? Like with the style tag, and you can even edit this as also HI also with span type We are gonna learn span tag in later on this section. Cannot go to into it right now. So that this is heading tag is clear to all. Let's move. Okay, heading tag is clear to all. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, don't call me ma'am. Okay, call me Pranshi only. Okay, let's move forward. Right? Are you building something? Like तुम भी ऐसे टैग्स को ट्राई करो व्हेन यू आर लाइक वीएस स्टूडियो कोड में. जब मैंने स्टार्टिंग में करना चालू किया था तो बेसिकली जैसे इसमें ऑप्शंस आते थे ना, मैं सारे ऑप्शंस ट्राई करती थी. तो मेरा टाइम काफी खराब होता था लेकिन मजा बहुत आता था. यू कैन इवन ऑल्सो ट्राई कि हाँ ठीक है, हम ये सब ऑप्शन आ रहे हैं, एक बार सारे ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, उनसे रियलिटी में होता क्या है. राइट? तो तुम भी ऐसे ट्राई करा करो. So let's move forward to the division tag. Like division tag is basically used when we are moving. Like मैं division tag को personally कहाँ use करती हूँ. For example, ये वेबसाइट अच्छी नहीं है, दूसरी वेबसाइट को खोलते हैं. For yeah, okay. Now for example, अपन division tag से क्या करते हैं. Okay. Okay, so division tag is basically used when you are completing your one section. मैं मेरा खुद का पोर्टफोलियो खोल के दिखाती हूँ, उसमें मैंने सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. जब मैंने स्टार्टिंग में चीजें सीखी थी फ्रंट एंड की, आई मेड दिस पोर्टफोलियो. Okay, then how we can use this division tag? Like basically this session is like from beginning of this session, this has come under one division tag, and for later in this session this come under the division tag second, and this is come under division tag third, this thing under division tag fourth, basically, right? So these are the division tags are being used. When you write a code, you will understand the basic of division tag. There's an article tag, section tag. There's a lots of tags you can do and use in your daily basis. But personally, you have to give class to it. Like I'm giving class me. Why we the classes is written. Like this is not a oops class. This is a simple class which we use in HTML. This is basically used when we give this section a class me. We can edit this me in the CSS. We are gonna learn more about the CSS in tomorrow session. So not get into it. There's a first a class and another one is identity. Okay, there's a difference between classes and identity. I think PDF में given होगी the difference between the classes and identity. Basically classes are the thing which can be used. अपन एक क्लास का नाम दूसरी क्लास में भी हो सकता है, but identity should be a single name. Like if मैंने इसका नाम ID रख दिया, right? Then it could be only me. पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही नहीं होना चाहिए, दूसरा मी नहीं होगा. This is what ID sets. Okay, ID अपन ID से भी like I will tell you in CSS जैसे अपन को मी एडिट करना है, like we have to edit the cat and dog. Basically CSS में क्या होता है, अपन डॉट me लिखते हैं, then we curly brackets and we edit our things like this. Like अपन को इसकी हाइट इतनी देनी है and things like this. जो भी अपन को चीजें एडिट करनी है वो अपन इस पे कर लेंगे. This is what basically classes and IDs are made of, right?
एक बार अपन PDF में देख लेते हैं to clear more thing about the IDs and the classes because it's very important when you are start writing CSS basically अपन को वही class लेना पड़ेगा जो अपन ने लिखा है to write the CSS to style the CSS. Okay, उसमें होगा तो अच्छी बात है, then we will Google से उठाएंगे. Okay. You guys are not getting bored now? No. Okay, thank you. अभी वो लोड हो रही है PPT. The difference between the classes and things will be. Okay, thank you. Okay. Or I will tell you about the resources that you can learn front end from free and effectively in the last. जहाँ से मतलब आपको खुद को भी बहुत मजा आएगा पढ़ने में और आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई जल्दी से हो जाएगी. मैं आपको वो रिसोर्सेज भी शेयर कर दूंगी. We completed the text. Text is completed. Body is completed. Title goes here. Completed. Body text, content text. Okay, body is completed. Attributes. Okay. These are basically attributes. Teacher. Follow the steps. View of the browser. HTML head. Welcome. Okay. इसमें classes हमने दे रखा. Text tag. Okay. Character formatting. Font color. इसमें एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है दैट वी आर ऑलरेडी अपन ने HTML में पढ़ लिया था कि फॉन्ट साइज को अपन HTML के अंदर भी कैसे चेंज कर सकते हैं. तो अपन उसको और देख लेंगे एक बार. अपन स्पैन से भी ट्राई करेंगे कि स्पैन एक चीज एक वो होता है जिससे आप बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हो. आउटपुट टैग्स एट्रीब्यूट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. ठीक है, इसमें क्लासेस एंड आईडी का नहीं दे रखा. ठीक है, बेसिकली क्लासेस एंड आईडी अभी के लिए इतना समझ लो क्योंकि कल अपन CSS पढ़ेंगे देन इट विल बी यूजफुल फॉर अस कि अपन एक बार क्लासेस एंड आईडी उस टाइम देख लेंगे, राइट. और अभी वैसे मैंने आपको ब्रॉड दे दिया कि बेसिकली अपन क्लासेस एंड आईडी क्यों बनाते हैं क्योंकि अपन को स्टाइल शीट में जो अपन CSS में चीज़ें जो एडिट करते हैं उसमें अपन को नीड पड़ती है उसकी बिकॉज वी यूज इट बाय डॉट ऑपरेटर. अगर अपन ने आईडी का नाम यहाँ पर डॉट दिया है तो अपन CSS में जो ऐड करेंगे वो अपन नी करके ऐसे ऐड करेंगे, राइट. So we are going to learn more. ये अपन कल सीखेंगे इसके बारे में. And classes are basically used. The difference between classes and ID is classes are very like classes को ऐसे बोल सकते हैं वो बहुत mutable टाइप की होती है. Like it can be changed, बहुत flexible होती है. But ID में बहुत सारी चीजें exception होता है. अगर if you are using ID, you have to care about certain things. जो अपन एक बार कल देख लेंगे या अभी एंड में देख लेंगे टाइम बचेगा तो. So basically IDs and classes have to be made in div section. You can even make classes and ID everywhere in the program, right? And these are the unordered list and ordered list. Basically what are the ordered list जो ordered से चलती हो and what is the meaning of unordered list जो unordered list से चलती हो. Okay, इसका कोई order नहीं हो. OL is denoted by unordered list. Like you can write everything like cake, everything can be written in ordered list and unordered list. Basically अपन ordered list को और unordered list को किस लिए यूज करते हैं I will tell you. जो अपने ऊपर जैसे you can see जो मेन्यू दिखता है ना टॉप ऑफ द वेबसाइट it can be made from the unordered list and ordered list. Okay. तो उसके लिए भी एक टैग होता है नेविगेशन nav टैग nav बार. ठीक है, बेसिकली इट इज यूज फॉर nav जिसमें अपन यहाँ पर क्लास का नाम लिखते हैं. ओके, क्लास nav. फिर अपन इसी nav क्लास को एडिट करते हैं. इसमें अपन ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें भी अपन क्लास देते हैं. इफ यू हैव टू एडिट अ सिंगल क्लास इक्वल्स टू इसमें अपन हैरिफ देते हैं. हैरिफ
I need options. बचा रही है हैरिस इक्वल्स टू लिंक. इसको हम पूरा एक्सप्लेन करूंगी व्हाई वी यूज हैरिस. एंड अपन इसमें लिख देते हैं होम. होम एक मेन्यू बना ही लेते हैं. यूएल हैरिस इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट. राइट, कॉन्टैक्ट. बेसिकली वी गोना सी कि अपने पास होम बन गया, कॉन्टैक्ट बन गया, एवरीथिंग इज under it. Why we use the navigation tag. Navigation tag will tell you everything which can be written in the top of the your रुक जाओ. Just for example, इसमें मैंने ये जो चीज अंदर आती है ये navigation tag के ऊपर आती है. Like this is written in the navigation tag. First I'll use the navigation tag and then I give the class in the navigation tag to edit the every single thing, and then home, about, work, contact is written in unordered list, right? So these are the use of navigation bar. This is the use of navigation bar, right? Navigation bar will basically tell you about the navigation, how to write a menu. Basically it is used how to write a menu of the website, right? And let's move forward. Now what is come under it? Ordered list हो गया, unordered हो गया, div tag हो गया. It's called division tag. And let's paragraph tag. This is very important tag. Paragraph tag is like lorem. Okay, पैराग्राफ टैग इज बेसिकली इट इज नोन बाय कि पैराग्राफ ही बनता होगा. इससे तो इसको ऐसा कुछ खास ध्यान देने की बात है नहीं, लेकिन तब भी अपन देख लेते हैं एक बार लाइव सर्वर में क्या हो रहा है. दिस इज द पैराग्राफ टैग एंड विच इज इट्स लाइक पैराग्राफ. अपन इसको ले सकते हैं कि हाँ हमने पैराग्राफ लिखा है. जो भी अपन एक वेबसाइट में यूज करते हैं उसमें पैराग्राफ तो यूज होता ही है. देन वी कैन एडिट इट टेक्स्ट स्टाइल से अपन एडिट कर सकते हैं. और वी कैन इवन यूज वन मोर टैग विच इज रियली इंपॉर्टेंट. यू कैन यूज दिस स्पैन टैग. Okay, what is good thing about the span tag is like you can edit a single thing. Like span tag को अपन कहीं भी यूज कर सकते हैं. like अपन स्टाइल टैग को हर जगह यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए वी यूज द स्पैन टैग. इसमें कलर ले लेते हैं. ओके, ग्रीन ले लेते हैं. ठीक है. एंड देन व्हाट हैपन, यू विल सी वी कैन इवन एडिट द सिंगल थिंग. यू कैन सी कि एक सिंगल चीज अपन एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पैन टैग. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये मेरी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ है. Okay, then this 01 is written in a different span tag. This is edited by span tag. This thing is edited by the span tag. This thing is edited by the span tag. Everything is edited by the span tag, right? If you want to learn more about this line, how could we write this line? We are going to learn another tag into it. Like basically this tag is used as HR. Okay, like HR tag. Okay, you will see the horizontal line. Like, okay, you can even use the vertical line in the VR tag. There's a lot of tag you can use, and even if you want to do something, you can Google it on, and you will see the lots of tag. Like horizontal tag is used when we write a paragraph, and we want to write a short line into it. Then we use a horizontal line. For vertical line, we use var tag, right? ऐसा सब कुछ हो जाता है. And horizontal tag and bold tag, strong tag, everything tag is we're gonna learn more about it. If you want to strong, like basically what do you mean by strong? Strong means bold. Okay, we can bold a single line, single alphabet by the strong letter. What is basically use of strong is like it is bold the thing up, like वो थोड़ा size में बड़ा कर देता है. बट ऐसा कुछ होता नहीं है. अपन साइज टैग भी यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई सेड कि इसमें टैग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट वी बेसिकली यूज अ लिटिल टैग. जब अपन थोड़े थोड़े टैग्स को यूज करते हैं, जो काम या फॉन्ट साइज कर रही है वही स्ट्रॉन्ग करता है, वही बोल्ड करता है. वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज से कैसे करते हो. फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने BR टैग लगा दिया. बेसिकली अभी डाउट आया कि अपन ने सब में एक ओपन टैग है, क्लोज टैग है. But BR and HR are the only tags, and there's a lot of other exception tag which is only unpaired. ये unpaired है, ये single ही काम करते हैं. Like break tag, this is a break tag, right? अब break हो जाएगा line is break.
ये दूसरी line आ गई, right? If you want to break a line, I use a break tag so much. It is very useful tag. Like you can break a line. Everything is happen in the break tag. This is very useful tag, I must say. I use it in lots of my projects. So break tag is a very what we can say, a single, okay, unordered, मतलब unpaired tags. And if we use strong tag, okay, this is a paired tag. Like we can store we are strong, we are strong. Okay, then you will see we are strong is bold, and it is basically what is doing, it's a bolding a structure. Like ये थोड़ा dark कर रहा है format को. This is what strong does. Now we'll see what bold does. Like term traction. okay, They are more or less reactive. On the pumps and all things mostly. So drivability. Correct. Better steering control. The same thing only. So these 3 points are which basically explain why we actually need suspension. And you can understand, like if you get a chance to sit in a Rolls Royce, you will understand that what's the difference between a conventional or a normal car and a Rolls Royce suspension system. is someone saying anything? Like the voice is not very clear. Like yes, the 3 tags are very similar. There are a lot. There comes a question, which is which tire do we use in rainy season? Anyone? Hello, we can't hear you. I think you're muted. I think you're muted. Okay. The voice is little shakeable. Like what we use in the rainy season. What tag we use in the rainy season? This is the question. Like I don't know what tag we use in the rainy season. Okay, what was that guy? कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? I think someone like unmuted by mistake. Okay, no problem. So we continue what we are learning, what we are doing, right? Ansha, I have a question. Yeah. You can even text. Like your voice is little audible नहीं है, तो तुम text कर दो. Yeah, can you hear me now? Yes, I can hear you now, Ranjit. Yeah. Okay, so my question is, can we Yeah. write a paragraph in the UL thing, like UL tag? No. Basically, why we use UL is like अपन को list बनाना होता है when you see a navigation tag. तो navigation में क्या होता है, इसका जो प्रोग्राम, इसका जो टैग चलता है ना, वो ऐसे चलता है कि ये थोड़ा सा अपन को गैप दे देता है. इट बेसिकली एक लिस्ट बनाने के लिए यूज होता है. इसका नाम ही लिस्ट है, राइट? तो वी कैन नॉट, लिस्ट में अपन पैराग्राफ नहीं लिख सकते. अगर अपन पैराग्राफ लिखेंगे तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि अपनी जो वेबसाइट होगी ना, वो बहुत ज्यादा अनटाइडी लगेगी और अपन को उस चीज को हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. लाइक वी आर यूजिंग द स्टाइल टैग, राइट? तो अपन स्टाइल टैग, स्पैन टैग, ये सब टैग यूज कर रहे हैं ना अपन. अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड में अगर अपन पैराग्राफ लिखेंगे ना, तो अपने लिए वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी हो जाएगी. एंड गाइज, आई वांट टू टेल यू वन थिंग. इफ यू आर राइटिंग अ कोड, देन यू हैव टू राइट अ कोड इन दैट वे कि जो अपन अगर उसको होस्ट करेंगे ना, तो बेसिकली ऐसा होस्ट करना चाहिए कि वो जब यूजर उस वेबसाइट पे आए तो वो लोड होने में कम टाइम लगे. बेसिकली इसलिए अपन ये मेटा टैग, ये सब टैग यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, जब यूजर आ रहा है, अगर यूजर, जैसे इफ यू मेड अ वेबसाइट, राइट? इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग एंड यू आर मेकिंग अ वेबसाइट,
अगर यूजर आया, ठीक है, अगर उसका 5 मिनट लग रहा है तो वो ऑब्वियसली हो जाएगा यार, अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा है, राइट। तो अपन को कोड उस वे में लिखना होता है कि अपन अपनी वेबसाइट को बहुत ज्यादा फास्ट बना सके। दैट्स व्हाई वी यूज रिएक्ट, right? That's why we use Tailwind. That's why we used a lot of another alternatives. इसलिए तो इतने ओपन सोर्सेज आ रहे हैं ना, तो ऐसे अपन ये सब चीजें कर सकते हैं। देन योर क्वेश्चन इज लाइक, अपन को लिस्ट के अंदर पैराग्राफ लिखेंगे तो उस चीज को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। एक बार आप ट्राई करना उसको, कल अपन CSS करेंगे, फिर अपन उस चीज को एडिट करेंगे कल। लाइक अपन अगर ऐसा करते हैं तो कैसी वेबसाइट होगी, राइट? Yeah, sure. Thank you. It's okay. So let's we are moving forward कि अपन ये tag पढ़ा, like what are the break tag is doing, it is breaking the item, strong tag, and there's a lots of tag, like इतने tag तो मेरे खुद को भी याद नहीं है, you can google it, जब जब तुम्हें काम पड़ेगा you can google it. So these are the basically. तो we are, एक आता है script tag, like script tag अपन HTML के ऊपर लिखते हैं. What we do in script tag, यहाँ पर अपन अपनी जो वो होगी ना, क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होगी, अपन उसको भी HTML से कनेक्ट करेंगे. इफ यू आर कंप्लीट अ बिगनर, यू हैव टू नो दैट अपन को HTML से सारी चीजों को कनेक्ट करना होता है. दैट्स व्हाई आई सेड कि HTML का कोई अल्टरनेटिव नहीं बना. वी कैन, अगर अपन बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो उसको भी अपन HTML के अंदर ही लिखते हैं. अगर कोई यूज कर रहा होगा तो दे विल नो कि बूटस्ट्रैप बनता है ना, वो अपन स्टाइल, जब मैं स्टार्टिंग में किया, आई वाज थिंकिंग कि जो बूटस्ट्रैप है वो अपन CSS के अंदर ही एडिट करते हैं. नो, एवरी अल्टरनेटिव इज यूज्ड इन HTML फाइल. सारी चीजें इधर ही एडिट होएगी, सारी चीजें इधर ही पेस्ट होएगी. इफ यू आर यूजिंग एनी फ्रेमवर्क, एनीथिंग, इट शुड बी इन दिस फॉर्मेट. दिस, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड, ये स्ट्रक्चर है, राइट. तो SRC, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, लेट्स मेक अ फाइल लाइक main.js, ठीक है, ओके. अपन इसमें main.js, नाउ स्क्रिप्ट टैग में क्या होता है, अपन main.js को ऐड कर लेते हैं. दैट्स व्हाई वी यूज स्क्रिप्ट टैग. डोंट फॉरगेट कि आप ये सब चीजें भूल जाओ कि यू आर राइटिंग CSS HTML, देन यू विल वेस्ट आवर्स. या ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कनेक्ट ही नहीं किया होगा. इट्स हैपेंड विथ मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टिल इट समटाइम्स हैपन. तो मैं बार बार यही चेक करती हूँ कि मैंने यहाँ पर किसी को लिंक तो नहीं छोड़ा है ना. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी, राइट. तो अपन ने ऑर्डर लिस्ट पढ़ी, अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी, नेविगेशन पढ़ा, क्लासेज एंड आईडी एक बार देख लेते हैं अपन गूगल पर. तो डेफिनेशन है बेसिकली क्लासेज एंड आईडीज, क्लासेज एंड आईडीज इन HTML. Okay, these are the basic the attributes. Attributes का meaning ही सबको पता है. Attributes are the basically a simple special text. You can say कि special text होते हैं जिस चीज के लिए यूज होते हैं. So basically what is the difference between ID and classes? Okay, देखो इनमें लिखा हुआ है, मैंने जैसे बताया था कि अपन, या जैसे अपन इसको आईडी को अपन हैशटैग से डिनोट करते हैं और क्लासेस को डॉट से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई फॉरगेट टू टेल कि आईडी हैशटैग से जाएगी, मतलब हैशटैग के लिए आपको आईडी को डिनोट करना पड़ेगा तभी जाके वो एडिट होएगी. और फॉर द क्लासेस यू कैन यूज डॉट ऑपरेटर, राइट. तो इसका एक बार डिफरेंस का टेबुलर फॉर्म मिल जाता तो सही हो जाता. You can even consider W3 schools, like it's nice. GFG, okay, text element titles dot class. Yeah, ये मिल गया. Targeting element using CSS. Using ID we can easily target the element using CSS. बेसिकली अपन क्लासेस से भी आईडी को एक चीज को टारगेट कर सकते हैं. आई कैन, और मैंने पहले भी बोला था कि अपन इस चीज को लेके एडिट करते हैं चीजों को, राइट. तो इसलिए अपन आईडीज और क्लासेस बनाते हैं. बट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लासेस? क्लासेस इज सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल. जैसे मैंने जो प्रोजेक्ट करे, मैंने पर्सनली ऐसा देखा, अगर बहुत सारी चीजों में अपन क्लासेस लगा देते हैं तो CSS को एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. व्हेन वी आर सीइंग कि एक ही चीज पर्टिकुलर है, उसको अपन आईडी बना के एडिट करते हैं तो वो यूनिक होती है. आईडीज आर यूनिक. यूनिक मीन्स दे आर नॉट, आईडी का दूसरा नाम कहीं चल ही नहीं सकता है. इफ यू डिड इट देन इट इज नॉट
क्लियरली वो पॉसिबल ही नहीं है. आईडीज आर यूनिक एंड क्लासेस आर नॉट. मेरे को याद आ गया, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस. आईडीज आर यूनिक एंड क्लासेस आर नॉट. इसमें पता नहीं दिया होगा नहीं दिया होगा. ओके, क्लासेस. Okay. HTML. Class is a global attribute that contains classes of an element. As the name suggests, a classes can be used to represent a set of elements having similar properties. An ID like classes, heading. Okay. Okay, so guys, this is the only difference. एक बार कल अपन वापस से देख लेंगे जो भी जैसा भी होगा उसके अंदर कि व्हाट आर द रियल मीनिंग ऑफ आईडीज एंड क्लासेस. वैसे मैंने बता दिया है कि आईडी यूनिक है, थोड़ी कम फ्लेक्सिबल है. आईडी अपन दो नहीं बना सकते एक ही नाम की. और क्लासेस का ऐसे है कि क्लासेस इज लिटिल फ्लेक्सिबल टू यूज और वो यूनिक नहीं होते हैं. बेसिकली व्हाई वी यूज इट, we use it because we want to edit our css files, and there are a lot of alternatives. I want to tell one tip. css थोड़ी टफ पड़ती है for a complete beginner because css के अंदर like you have to like style when you इतना बंदा स्टक हो जाता है कि ठीक है हमको लेफ्ट जाना है राइट जाना है कि अपन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करें. बेसिकली इमेज टैग होता है. यस, इमेज टैग. धीरे धीरे टैग याद आते हैं, राइट. बेसिकली व्हाट आर द इमेज टैग. इमेज टैग इज बेसिकली यूज फॉर इमेज, राइट. ये भी नाम से पता चल रहा है. बट इमेज टैग भी अनपेयर्ड होता है. लाइक अपन एसआरसी से अपनी इमेज डालते हैं यहाँ पर और इस पे अपन अल्टर क्या करते हैं. अगर अपनी इमेज लोड नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी इमेज लोड नहीं हुई तो अल्टर में आप जो भी लिखोगे वेबसाइट आपकी वो चीज शो कर देगी. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अल्टर टैग यूज करो, लेकिन फॉर अ गुड प्रैक्टिस यू कैन यूज अल्टर टैग. एंड एसआरसी इज बेसिकली यूज फॉर सोर्स. लाइक अगर अपन लेंथ डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, इट कम अंडर द एसआरसी. एंड इमेज टैग is basically used with unpaired. like image अपन को कोई भी वेबसाइट पे लगानी है and this image can be edited. किसकी साइज कितनी होएगी, वो लेफ्ट में होएगी, राइट में होएगी, नीचे होगी, ऊपर होगी, जो भी होगा वो css से एडिट हो सकता है. everything is edited in the css to make our web page more stylish, right. तो ऐसा है अपन इस चीज में इमेज टैग को यूज कर सकते हैं. एक और चीज आती है जो अपन सीएसएस पढ़ेंगे, बैकग्राउंड इमेज. बैकग्राउंड इमेज सीएसएस में यूज होता है जिसका टैग होता है यूआरएल. तो अपन कल पढ़ेंगे एवरीथिंग. तो अभी अपन को बेसिकली यही यूज करना है कि इमेज टैग हो गया, एसआरसी हो गया, एवरीथिंग इज कम अंडर इट. लेट्स ओपन. ओ माय फाइल इज नॉट, माय विजुअल स्टूडियो इज नॉट विजिबल टिल नाउ. मैं उस पर समझा रही थी इसी वजह से. ओके, तो अपन एक बार विजुअल स्टूडियो पढ़ लेंगे. स्क्रीन इज नॉट सीन. क्या मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया. माय स्क्रीन इज नॉट सीन. रुक जाओ, मैं एक बार शेयर कर देती हूँ. नोबडी. आई एम शेयरिंग इट, नो वरीज. तो बेसिकली मैंने ये लिखा था कि ये अपना इमेज हो गया. इमेज में एसआरसी इज बेसिकली मीन फॉर द सोर्स एंड अल्टर इसलिए लिखते हैं जैसे अगर इमेज लोड नहीं हुई तो अपन अल्टर टैग से यूज कर सकते हैं, राइट. दिस इज बेसिकली व्हाट इज मीन बाय इमेज टैग. इमेज टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी वेबसाइट अगर पिक्चर्स नहीं हुई, एनिमेशन नहीं हुई तो फिर लाइक क्या ही है ना, बोरिंग हो जाएगी. दैट्स व्हाई वी यूज इमेज टैग. एंड अल्टर टैग इज अल्टरनेटिव. लाइक अपन कुछ भी लिखेंगे अगर इमेज नहीं होगी तो वो अल्टर टैग आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी इमेज नहीं दी तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 1 2 3 4 5 6. so we can see, open in live server, we can see image आया नहीं and this tag is visible, right. this is what alter do. अगर आपका इमेज में कोई एरर आ रही है तो वो अल्टर जो भी आपने अल्टर दिया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा. अंडरस्टूड. एक बार अपन B3 स्कूल पे जाके देख लेते हैं कि अपने कौन कौन से टैग रह रहे हैं, तो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे.
अपन ने हेडिंग कर लिया, पैराग्राफ कर लिया, स्टाइल हो गई, फॉर्मेटिंग हो गई. ओके यस, देयर इज अ टैग्स लाइक, ओके इसको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार. जो टैग्स होती है फॉर्मेटिंग इज बेसिकली लाइक कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे कैसे फॉर्मेट कर सकते हो. मेरी स्क्रीन विजिबल है? It's visible? Yes, it is visible. ओके ओके, तो एक बार इसको जल्दी देख लेते हैं. तो बी टैग इज लाइक बोल्ड टैग के यूज होता है. स्ट्रॉन्ग कि मैंने एक्सप्लेन भी किया था. फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग टैग, दिस इज स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग टैग. ये जो चीज़ स्ट्रॉन्ग हुई वो स्ट्रॉन्ग टैग के लिए यूज हुई. इटालियन टैक्स इज बेसिकली वी कैन यूज इट लाइक, एक बार यूज कर ही लेते हैं. वैसे टाइम खराब भी होगा क्योंकि इट्स बेसिक सिंपल टैक्स लाइक एम्फसाइज टैक्स, मार्क टैक्स. इसमें मार्क्ड हो जाएगी चीज़ें. स्मॉलर टैक्स, डिलीट टैक्स. आई डोंट नो व्हाट इज द यूज ऑफ डिलीट टैक्स. कोई बताएगा मेरे को डिलीट टैक्स का क्या यूज है? वी कैन इजीली डिलीट द थिंग बाय बैक स्पेस चला दो, डिलीट हो जाएगी. एनीथिंग कोई बताना चाहेगा? मेरे को खुद को समझ नहीं आया इसका क्या सेंस है डिलीट टैक्स का. कोई बताएगा? एनीवन? What if like you have very bigger paragraphs and you don't want others to see it? I guess in some situations. यार दिस कुड बी अ रीजन. ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. आप इसको डिलीट टैक्स का रियल मीनिंग सर्च करके आओ कि यहाँ हम डिलीट टैक्स हमने किसी को किसी वेबसाइट में देखा है कि हाँ ये यूज हुआ होगा, कोड वर्ड यूज हुआ होगा. दिस इज योर होमवर्क फॉर ऑल. ठीक है, दिस इज अ लाइक डिलीट टैक्स भी एक टैग होता है, राइट? ओके ओके, कुछ लिख तो दो. ओके ओके हर्ष. ओके ओके, so let's move forward. What is delete text हो गया, insert text हो गया. Insert text is basically used for inserting. Subscript text हो गया, subscript text, everything is subscript है और super subscript है. Like what is the difference between super subscript and subscript? एक बार इसको देख लेते हैं. बार इंफ्रासाइज को देख लेते हैं. इंफ्रासाइज भी क्या करता है? दिस इज इंफ्रासाइज, राइट? पैराग्राफ, दिस इज इंफ्रासाइज. वो इंफ्रासाइज हो गया. ये भी टेक्स्ट की स्टाइल ही है. लाइक दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज इंफ्रासाइज. सेम इज लाइक इटैलिक्स बट इट इज बिट डिफरेंस बिटवीन द इटैलिक्स. ओके, these are the इंफ्रासाइज. स्मॉल में टेक्स्ट स्मॉल हो जाएगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग में वो स्ट्रॉन्ग हो रहा था. मार्क में ये मार्क हो जाएगा. करेक्टली इट इज मार्क्ड. ओके, ये हाईलाइट हो जाएगा. दिस इज हाईलाइट. ये अपन CSS से भी करते हैं, तो कल देखेंगे. CSS से सारी प्रॉपर्टीज जो इसमें आ रही है ना, वो सारी प्रॉपर्टी CSS में भी होती है. CSS में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है. फॉर स्मॉल, मार्क, हाईलाइट, एवरीथिंग इज कम अंडर द CSS. इटैलिक, आपको कैसा फॉन्ट करना है, एवरीथिंग इज कम अंडर द CSS. ये कल के लिए ऑप्शन है, इसको अपन अभी देख लेते हैं. बट ये कल इसको एक बार स्टार्टिंग के 5 मिनट कल इसको डिस्कस करेंगे, राइट? डेल हो गया, इंसर्ट हो गया. इंसर्ट लाइक माय फेवरेट कलर इज ब्लू, राइट? माय फेवरेट कलर इज ब्लू. ये अंडरलाइन हो गया. लाइक मैं ये चीज सोचती थी कभी कभार जब अपन वेबसाइट पे जाते हैं. द थिंग इज लाइक दिस कि एक हटा और दूसरा आ गया. दिस इज टर्न बाय दिस. अच्छा डिलीट कर खुल गया हो. ओके ओके, तो सब हो गया. The HTML sub element define a subscript text. What are the subscript text? Appear half a character below it. Like these are the subscript. When you have to write H2O, तो subscript में ये H2O इनके लाइन से थोड़ा छोटा है. That's why we use subscript text. Subscript text is basically used. This is subscripted.
सबस्क्रिप्टेड क्या आ जाएगा, ये बिलो आ जाएगा, लाइक दिस इज कम अंडर बिलो इट, लाइक एक्सप्लेन इट इन द, एक्सप्लेन करते हैं। ये है सबस्क्रिप्ट। एक सबस्क्रिप्ट में अपन जब मोस्टली अपन जब केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, मोस्टली चीजें सबस्क्रिप्ट में आती है। जब हम बुक में सोचते हैं यार ये कैसे टाइप किया होगा, दिस इज रिटन बाय विथ सब सेक्शन, सब टैग, राइट। सब टैग में होता है एक सब होता है विच इज सब, सुपर सबस्क्रिप्ट। सुपर सबस्क्रिप्ट क्या करता है, सुपर सबस्क्रिप्ट ऊपर कर देता है, सबस्क्रिप्ट नीचे कर देता है, राइट। आप ट्राई करना, जब आप पूरी ढंग से करोगे सारी टेक्स्ट आपको ट्राई करने पड़ेंगे, एवरीथिंग इज कम अंडर इट, ओके। आई वॉन्ट टू टेल कि गाइस मैं आपको टेबल अभी तक पढ़ाती, बट टेबल आर लिटिल कॉम्प्लेक्सेड, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स एक अपन मान सकते हैं। एचटीएमएल में आप किसी से पूछोगे डिफाइन क्या, टेबल फॉर्म करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें यूज होती है, उससे उसके टैग्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे अपर टेबल, कोई ये लिया वो लिया, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो उसमें आज अपन नहीं जाए तो बेटर है। कोटेशन हो गया, कमेंट्स आ गए, ओके। कमेंट्स आर द बेस्ट थिंग। कमेंट्स तो मैं भूल ही गई। कमेंट्स, कमेंट्स कैसे करते हैं, कमेंट क्या होते हैं जो कंपाइलर रीड नहीं करेगा बट इट विजिबल। कमेंट कैसे करते हैं इसमें, दिस इज कमेंट। कमेंट का जो सिंटेक्स होता है एचटीएमएल में वो ये होता है, और ये खत्म कब होएगा, जैसे अपन को इतना मीट तक करना है, राइट। दिस इज कमेंट। दिस आर द कमेंटर्स। तो कमेंट हो गया, कलर हो गए, कलर्स आर बेसिकली कम अंडर इट एचटीएमएल सीएसएस। एचटीएमएल सीएसएस में स्टाइलिंग आ जाएगी। बेसिकली अपन स्टाइल कैसे करेंगे, स्टाइल एचटीएमएल में स्टाइल का मतलब है कलर ऐड कर दो, फॉन्ट साइज ऐड कर दो, और उसको उसकी पोजिशनिंग और फ्लोटिंग चेंज कर दो। एचटीएमएल में सीएसएस का मतलब इतना ही है। दैट्स व्हाई सीएसएस इज इन्वेंटेड टू डू लॉट्स ऑफ स्टफ। या बहुत सी चीजें एडिट कर सकते हैं, ये अपन होवर की मदद से कर सकते हैं। इसमें होवर हो नहीं रहा है, बट इसमें होवर होएगा, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें होवर होएगा, देयर समथिंग इज चेंज, लाइक होवरिंग, व्हाट इज होवरिंग डज, जब मैं इस पे अपना कर्सर लेकर आ रही हूँ तो समथिंग इज चेंज, राइट। दिस इज व्हाट होवर। होवर वाला ऑप्शन सीएसएस ने दिया। सीएसएस गिव लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स फॉर स्टाइलिंग, तो इसलिए सीएसएस इज यूज्ड, एचटीएमएल स्टाइल इज नॉट यूज्ड। वी कैन just make a basic simple web page from HTML, but to make it more responsive, अपन responsive CSS से बनाएंगे। responsiveness is cannot be made with HTML। HTML से अपन responsive नहीं बना सकते, that's why वो सिर्फ style CSS से बनेगी, या आप कोई framework यूज करते हो उससे बनेगी, right। that's why CSS का स्टाइल का मतलब, CSS HTML में CSS का मतलब इतना ही है that you are कलर कर दिया, ये सब चीजें कर दी, इसको बोल्ड कर दिया, राइट। वी ऑलरेडी एक्सप्लेन द स्टाइल टैग। स्टाइल टैग पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसमें फ्लोट वाला आएगा नहीं आएगा, ओके। द लिंक्स, यस आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाई वी यूज हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स इसलिए यूज करते हैं कि जब भी आप पे जैसे फॉर द हाइपरलिंक की मदद से अपन क्या कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ गई, ओके। ये मैंने हैरिफ टैग से मेरा यूट्यूब अकाउंट, मतलब मेरा ट्विटर अकाउंट ऐड किया। व्हेन वी आई क्लिक्ड ऑन इट, इट टेक मी टू द प्लेस, ये उस जगह मुझे लेके चल जाएगा जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ। दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपरलिंक, ओके। हाइपरलिंक को अपन इसलिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को बैक जाना है, मेरे को मेरे लिंक्डइन पे जाना है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, मैंने इस पर लिंक डाला, हाइपर लिंक डाला। मैंने जब उसका कोड लिख रही थी मैंने हाइपर लिंक की जगह कंट्रोल+C फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल+C फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर हैरिफ दिया था, राइट। तो हैरिफ में मैंने ये लिंक पोस्ट कर दी, ओके। दिस इज व्हाई इट कम, जब मैं होम पे क्लिक करूंगी तो मुझे उस लिंक पे लेके चल जाएगा। वर्क क्यों नहीं कर रहा है, बेसिकली ऐसा ही होता है कि हैरिफ पे आप जाते हो तो वो होम पे अगर आपने क्लिक करा तो इट कम अंडर द होम। तो हैरिफ में अपन हाइपरलिंक ऐड करते हैं। अगर आपके पास स्टार्टिंग में हाइपरलिंक नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट हैशटैग दे दो, राइट। तो दैट्स व्हाई एक्चुअली इसमें ऐसा होगा कि इसकी क्लास बना के अपन क्लास में एडिट करना पड़ेगा, राइट। वी नॉट गो सो डीपर इनटू इट राइट नाउ बिकॉज इट्स जस्ट अ फर्स्ट लेक्चर। और एचटीएमएल में भी बहुत सी चीजें होती है जो अपन को सीखनी पड़ती है और वो टाइम में सिखाता है।
तो लिंक हो गया, लिंक कलर हो गया, लिंक बुकमार्क हो गया, अपन बुकमार्क कैसे कर सकते हैं। एक टारगेट एट्रीब्यूट हो गया, व्हाई वी यूज टारगेट एट्रीब्यूट, बाय डिफॉल्ट द लिंक पेज विल बी डिस्प्लेड इन द करंट ब्राउजर विंडो। जैसे अगर मैंने मेरी उस पर क्लिक करा तो वो लिंक किस में खुली, फॉर एग्जाम्पल वो उसी पेज पे खुली, राइट, ये इसी पेज पे खुली। अब जैसे मैं बैक जाऊंगी तो गेटअप खोलूंगी तो गेटअप भी इसी पेज पे आएगा वो, राइट। तो ये भी मेरा इसी पेज पे है, ठीक है। तो इसी पेज पे खुलने की वजह से अपन ने हेरेफ यूज किया, दैट्स व्हाई ये इसी पेज पे आया। इफ यू यूज टारगेट तो टारगेट क्या होगा, एक नई विंडो खुल जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल अपन V3 स्कूल पे गए एंड आई ओपन दिस और मेरे को इस पे चाहिए लॉगिन एक्सरसाइज, ठीक है। ये भी अपन ने ट्यूटोरियल इसका टारगेट का एग्जांपल देखा था। Try it yourself. When we click in try it on yourself, it open a different window. That's why the target is used. There the difference between the href and target is that these both are used to put the links. अपन दोनों में ही लिंक का यूज करते हैं, बट बेसिकली व्हाट हैपेंड विद द टारगेट इज लाइक टारगेट में आपकी नई विंडो खुलती है, बट href में आपकी उसी विंडो के अंदर काम होता है। अंडरस्टूड। तो बेसिकली वेयर वी आर लिंक्स पे थे, तो यही होता है, हाइपर लिंक, टारगेट लिंक्स आर बेसिकली यूज ऑन दिस डिफॉल्ट ब्लैंक ओपन, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ, बट बेसिकली जब आप रियल वेबसाइट बनाते हो तो उसमें भी टारगेट और href यूज होएगा, ठीक है। अब आता है URL एंड रिलेटिव URL। बोथ एग्जांपल्स आर यूजिंग एब्सोल्यूट URL, अ फुल वेब एड्रेस, href एट्रीब्यूट। ये सब वही है कि वॉट एवर आई एक्सप्लेन वो उसी में वो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। यूज लिंक, लाइक इसमें भी SRC पैड टोल्ड यू कि अल्टर देते हैं तो आ जाएगा। यस, यू कैन इवन एडिट द इमेज बाय स्टाइल विड्थ और हाइट। अपन इसी के अंदर ये चीज भी एडिट कर सकते हैं विद एंकर टैग। व्हाट इज ए टैग? ए टैग इज अ एंकर टैग। अब तुम लोग है ना, मैं सारा चीज बताऊंगी बस, तो ऐसा हो गया यार, इतने सारे टैग है, हाउ डू वी रिमेम्बर। आप इसको भी डिव में डाल दो, किसी में भी डाल दो। एंकर टैग आर बेसिकली यूज फॉर, अपन को एक स्पेसिफाइजेशन करना होता है उसके लिए एंकर टैग यूज हो जाता है। नॉट टू मच इनटू इट, एंकर टैग भी आप यूज करोगे व्हेन यू गेट टू नो इनसाइड इट, लाइक जस्ट पुट इमेज टैग इनसाइड द एंकर टैग। ए से मतलब एंकर है, इतना याद कर लो फिलहाल अभी। अब मेल टू, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेल टू में क्या होता है, जैसे आपने अपनी मेल डाली, लाइक यू मेड अ कॉन्टेक्ट फॉर्म, राइट। एक आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया, मेरे पास बना हुआ रखा था, उसका कोड चलाऊं कि उसका कोड फिलहाल मिलेगा नहीं, वो को ढूंढने में टाइम चला जाएगा। एक मैंने फॉर्म बनाया था, राइट। बेसिकली इट इज यूज फॉर अ फॉर्म। इसमें अपन क्या देते हैं, एंकर टैग के अंदर मेल टू देते हैं। मेल टू के अंदर समवन्स मेल, जैसे कोई भी इंसान सेंड मेल पे क्लिक करेगा तो जो भी आप अपना क्वेरी डाल दो, कुछ डाल दो, तो वो उस इंसान के मेल पे चल जाएगी। बट आई वुड लाइक टू, लाइक मैं जो इसका शॉर्टकट यूज करती हूँ, मैं फॉर्म फ्री पे जाती हूँ, मैं वहाँ पर अपना जो भी फ्रंट एंड का पार्ट है उसको कनेक्ट करती हूँ। वो बेसिकली एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, वो लिंक को मैं इस टैग में डाल देती हूँ, बॉडी में डाल देती हूँ, या कहीं भी डाल देती हूँ। जैसे बेसिकली इस पे करोगे तो आपका पेज जल्दी लोड होएगा, बट आप कहीं भी उस पर डाल सकते हो। उसको डालने से क्या होगा, उनका ऐसा ओपन सोर्स बना हुआ है वो, कि वो अगर आप जस्ट, ये आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट जनरेट अ मेल, वो आपको एक छोटा सा लिंक बना के देंगे। वो इतना छोटा लिंक होएगा, इतना छोटा लिंक देंगे, उसमें जो भी क्वेरीज आएगी इट शुड बी एडिटेड, राइट। तो वो सब चीजें मत करो, पहले आप मेल टू ट्राई करो, ठीक है। बटन क्या होगा, बेसिकली बटन आर यूज, इज एनीवन सेइंग समथिंग? वी आर जस्ट कंप्लीटिंग इट इन जस्ट 5 मिनट लेफ्ट, राइट। मैं एक बार इसका पूरा W3 से कर लूँ, आई एम नॉट गोना बोर यू सो मच, बस इतना तो देख लेते हैं। देन टुडे आपने जो भी सीखा है, एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन रिवाइज करना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और यू हैव माई ट्विटर अकाउंट, माई लिंक्डइन प्रोफाइल और गिटअप, कुछ भी आप मेरे को टेक्स्ट करना, आई विल रेडी टू हेल्प, राइट। तो एक बार इसको देख लेते हैं, वी आर जस्ट जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो एब्सोल्यूट URL, रिलेटिव URL are the deeper path. Okay, mail to image, target, href. Use element to define a link. Basically anchor tag is used to define a link. Like तभी अपन लिंक के लिए यूज करते हैं कि href यूज कर दिया तो लिंक हो जाएगा, that's why it's not working. अपन ने यहाँ पर URL दे दिया, अपन ने लिंक दिया, we should be like अपन को इसको एंकर टैग में देना था, that's why कि लिंक काम कर जाए।
राइट। इस पर दे देते हैं XYZ ओपन इन लाइक या लिंक बन गई है। एंकर टैग इज यूज्ड इन दिस। इसमें लिंक पे क्लिक करा तो मेरा लिंक्डइन खुल गया। तो दैट्स व्हाई वी यूज एंकर टैग। एंड वन थिंग इज मोर, जब आप आगे पढ़ोगे तो यू कैन कि किसी ने आपका पेज विजिट किया है तो जैसे ये पर्पल कलर का हो गया, यू कैन इवन चेंज दैट कलर टू। उसका भी एक टैग होता है, आई डोंट रिमेम्बर, मेरे को भी याद नहीं आ रहा उसको कौन सा टैग होता है, बट यू कैन इवन एडिट द कलर कि हाँ आपका लिंक कौन सी कलर का दिखना चाहिए। और ये सब चीजें भी अपन CSS में एडिट करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। एब्सोल्यूट URL एवरीथिंग इज इमेज URL एड्रेस बटन। बटन टैग इज यूज लाइक बेसिकली अपन सिर्फ बटन टैग डालो, बटन बन जाएगा। इसका टारगेट आता है ऑन क्लिक, ये सब होता है इसका, राइट। बटन में अभी मत जाओ, बहुत ज्यादा हो जाएगा, टैग 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 हो जाएगा। सो वी कंप्लीट करें या फिर और पढ़ना है? वैसे तो खत्म हो गया, ये सारा एडवांस है। एडवांस HTML है। स्किन हो गया, टेबल होगी, इमेजेस हो गया, बुकमार्क हो गई, क्लासेस हो गई। एक बार क्लासेस और आईडीज देख सकते हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। क्लासेस और आईडीज, okay. The HTML classes attribute is used to specify a class for HTML element. Multiple HTML element can be shared to the same class, but ये एग्जांपल था आईडी का कि आईडी का सिर्फ एक ही शेयर होगी, वो ज्यादा फीजिबल नहीं होती है, राइट। देयर सिटी, लाइक अपन ने यहाँ पर सिटी लिया, ये सब स्टाइल हो रहा है, ठीक है। बेसिकली अभी क्लासेस में इतना ही याद करोगे, क्लासेस बहुत फीजिबल होती है। अपन बेसिकली एक टैग के अंदर क्लास नाम देते हैं जैसे अपन उसको HTML में एडिट कर सके। ये एक HTML एट्रीब्यूट होता है जो यूज होता है कि अपन डिफरेंट HTML एलिमेंट्स को सेम क्लास के अंदर लिखे एंड उसके ऊपर काम करें। तो एवरीवन, आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। डिड यू गाइज एंजॉयड? अब मैं एक बार पानी पी लेती हूँ इसलिए। Yes, everyone, I'm back. Yes, everyone, I'm back. Did you guys enjoy? और हाउ मेनी ऑफ यू जिन्होंने ये पहली बार फ्रंट एंड पढ़ा था, लाइक आप टेक्स्ट वगैरह पे लिख दो यस थैंक यू सो मच। तो आप मतलब दे आर द 44 पीपल। मेरे को कल CSS में पूरे चाहिए, तो CSS इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबको आना चाहिए उसके अंदर। CSS ऐसे नहीं कि आप कि ठीक है हम तो वही कर लेंगे, फ्रेमवर्क से कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Okay, Krishna, you have anything to say? Yes. Okay. तो टेल मी कि आप लोग सारे कौन कौन सी ईयर्स में हो। इट जस्ट पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं होगी, जस्ट अ सिंपल टॉक, राइट। यू कैन से एक बार 10 मिनट की चिट चैट कर लेते हैं कि व्हाट यू गाइस आर एम्बिशियस, किसका क्या क्या ड्रीम है। आई वुड लव टू नो पीपल ड्रीम, कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। 8 बजे सही में खत्म कर देंगे। Presently we are in second year. All are in second year. हाँ Okay, nice. तो मतलब कौन से कॉलेज में हो? सारे आरवी दिख रहे हैं मेरे को। Yes. Okay. So did you enjoy the session? सबसे बताना, थोड़ा बोरिंग तो नहीं लगा? तो इसलिए मैं कल उस चीज़ पर काम करूँ, कल मैं थोड़ा और जो आज गलतियाँ हैं उसको सही करूँ। If anything, anyone has to tell anything, then please. What you guys are currently doing? Like, ठीक है, कोई ब्लॉकचेन कर रहा है या क्या क्या कर रहा है, कोई किस किस फील्ड में जा रहा है, कोई डेवलपर रिलेशंस में जाना चाहता है, आजकल ये नई ब्रांच बनी है। एनीवन नोज अबाउट इट?
current yes presently civil. Okay. ये क्या होता है? ओके ये ना किसी को नहीं पता जो ट्विटर ज़्यादा यूज़ करता है ना उन्हीं को पता है ये ऐसा होता है कि इफ़ यू नो एनीथिंग तो आप कम्युनिटीज़ में जाओ आप उनको चीज़ें बताओ कि ठीक है यू डोंट रियली हैव टू कोड जहाँ तक मेरे को पता है ब्लॉकचेन इज़ न्यू टू अस ओके मैंने सिर्फ ब्लॉकचेन की एक बुक पढ़ी है मैंने सिर्फ वो बुक पढ़ी है उसमें मैंने सिर्फ क्रिप्टोग्राफी तक मैं पहुंची वो भी सिर्फ मेरा आधा ही हुआ लाइक आई नो अ बिट अबाउट व्हाट इज एसएसएस कीज एंड बस मेरा इतना ही हुआ फिर मेरे को टाइम भी नहीं मिला उसको कंप्लीट करने का आई वाज थिंकिंग कि मैं इस मंथ उसको कंप्लीट कर दूं तो मतलब व्हाट यू गाइस आर करेंटली वांट टू डू लाइक 4th ईयर तक आप लोगों को कहाँ तक पहुंचना है एनीथिंग कि ठीक है हमें खुद का करना है या फिर ठीक है हम गूगल माइक्रोसॉफ्ट जाएंगे समझ नहीं आता क्या ब्लॉकचेन इज न्यू टू अस समझ ही नहीं आता क्या समझ नहीं आता कोडिंग वगैरह क्या मैं सच बताऊं मैंने डीएसए अभी तक चालू नहीं करी बहुत कंफ्यूजन है या ये होता है यू जस्ट हैव कंफ्यूजन फॉर जस्ट 1 मंथ अगर आप डेली एक ही एक चीज़ को करोगे ना तो सर्टेनली वो चीज़ आपको ढंग से आ जाएगी लाइक मैं एक चीज़ बताऊँ लाइक मैं जब जावास्क्रिप्ट लिखती हूँ अभी भी जस्ट मैंने एक वीक का ब्रेक ले लिया और मैं एक वीक के बाद जावास्क्रिप्ट लिखती हूँ तो मेरे को वापस से मेरे नोट्स से थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है तब जाके मैं लिख पाती हूँ तो यू नो कोडिंग इज थिंग्स लाइक दिस अगर आप इसको डेली कर रहे हो ना तो वो बहुत बेनिफिट है अगर आपने थोड़ा सा मिस किया तो आप मतलब आउट ऑफ रोड हो जाते हो उस टाइम के लिए सो दैट्स व्हाई आई होप वी विल मीट tomorrow again with CSS and I will suggest कि जो delete वाला था वो मुझे कल कोई बताए I just want to complete second year properly with good GCGPA is my रंजित बताएगा पर कल कि delete tag का क्या होता है और classes ID पूरा रंजित बताएगा because he want to get good CGPA right फिर तुम्हारा CGPA में आएगा नहीं है but still ठीक है तो कल मिलते हैं आई होप यू गाइस एंजॉयड मेरे को भी बहुत मजा आया पढ़ाने में दैट साइनिंग ऑफ ओके बाय बाय गाइस Thank इफ यू हैव you. एनीथिंग